The universe is big and we are always trying to understand it. Today, let's take a step closer to understand this universe. Everybody, welcome to this concept bite sessions, and today let's take one step closer to understand the universe. Yes, universe is big and we are so small if you think about it, right? But still, it does not demotivate us. We are still trying to figure out how everything works, and this is the first step, the universal law of gravitation. Today's concept bite session, I'll explain you what is it, how it works, what kind of questions will come in your examinations, and yes, we'll have a lot of fun in this small video. That's how concept bites works here. Come on, right? Let's start. A legend says it all started with an apple. Yes, apple, not Apple the company, Apple the सेब, right? कहानी शुरू हुई थी सेब के साथ. Newton was sitting under a tree and he saw an apple falling down, and he thought, why is it coming down? क्यों नीचे ही आती है हर चीज, right? And he started pondering upon a lot more, and slowly he realized, yes, there is a force governing all of this, right? There is a law which can be translated out of it. और ऐसे ही होता है, पता है law क्या होता है? What is law? Law is something which you observe something for a long time and then you derive conclusions out of it. Imagine करो, you don't know anything about cricket. तुम्हें पता ही नहीं है cricket क्या होता है, but you are sitting and you keep watching the game. आपको एक चीज धीरे धीरे समझ में आएगी कि यार, if this person holding this डंडा in his hand, let's say the bat, जब वो मारता है, this round object, the ball, whenever someone catches it directly, बैट से बॉल लग के जब कोई डायरेक्टली कैच कर लेता है, हम बोलते हैं उसको जाना पड़ेगा, है ना? We call it out. You watch the game for a very long time without knowing the rules, but you will figure out कि यार ये एक चीज तो होती है ना? बंदा आउट होता है जब कोई बैट से डायरेक्टली बॉल मार के पकड़ ले हाथ में, है ना? You figured it out yourself and then you said it's a rule. Same thing we are doing with nature. We are observing everything and then we are deriving conclusions और हम बोलते हैं उसको law. So law आप बनाते नहीं हो, law को आप ढूंढते हो, वो है. It's like a rule in the nature. बस आपने उसको figure out किया. कैसे? By seeing lot of patterns, right? So that's why this is how we say laws are laws. ये तो हैं, इनको हमने देखा है होते हुए. Correct? कल अगर you find something which contradicts this law, then you will say this law does not hold true. Correct? है ना? Question बना. How did he start thinking? Newton. He said, what holds the moon in sky? Apple is falling towards the earth. चंद्रमा है, the moon, it is in the sky. वो नीचे नहीं आ रहा, है ना? Apple तो आ रहा है. But are both the forces the same? क्या दोनों force same है? मून तो नीचे नहीं आता है, बट एप्पल आ जाता है. करेक्ट है ना? यस, ये था क्वेश्चन जिनसे कहानी चालू हुई. एंड दैट्स व्हाई वी अंडरस्टूड ग्रेविटेशन. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ग्रेविटेशन. ये वर्ड हम बहुत बोलते हैं, ग्रेविटी, नॉट द मूवी. बेसिकली ग्रेविटी मीन्स द फोर्स, और आई वुड से द प्रॉपर्टी विच लेट्स यू स्टे ऑन दिस प्लैनेट. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद आप तैर रहे होते स्पेस में, मे बी, राइट? है ना? करेक्ट. सो what is gravitation? It's a universal attractive force that acts between any two objects having mass. अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेविटेशन. ऑलराइट, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वी स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. हमने और एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने सोचने की कोशिश करी कि यार, कैन आई एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन, कैन आई गिव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू इट? वी स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. हमने क्या पाया कि ये जो फोर्स है ना, ये डिपेंड करता है दोनों के मासेस पे, राइट? सो दिस फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ जाता है, इसका बढ़ाते हैं तो भी बढ़ जाता है, इसका बढ़ाते हैं तो भी बढ़ जाता है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. करेक्ट? ऑलराइट. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. वेरी गुड. नाउ हमने एक चीज और देखी
it is inversely proportional to the square of the distance between two objects. And when I say distance between two objects, from their center, इन दोनों objects के center से जो distance होगा, this force is inversely proportional to it. What do you mean? कि if I take these objects far, the force decreases. किस रेशियो में? सर इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के रेशियो में, है ना? इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट्स फार, फोर्स डिक्रीजेस. इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट्स क्लोजर, द फोर्स इंक्रीजेस. किस रेशियो में हो रहा है ये? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के रेशियो में, राइट? सो दैट्स व्हाई ये हमने एक और चीज ढूंढी, करेक्ट? वी सॉ द पैटर्न एंड वी क्रिएटेड कंक्लूजन कि भाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ऑलराइट, सेकंड थिंग. नाउ with these two observations we were in a position to kind of formulate this whole law. क्या बना? इसको याद करने की जरूरत नहीं है. whatever we have learned till now उसको बस combine करना है एक statement में. we have to combine all of that in one statement. It states what? The universal law of gravitation. And mind it, there's a word universal. Universal मतलब all over the universe, not just earth. ऐसा नहीं है केवल earth पे लगता है. universe की बात कर रहे हैं. It states that every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. All those two observations is basically one law. दोनों को combine कर दिया हमने और बोला कि भाई force जो है it is F is directly proportional to m1 multiplied by m2 upon d square. And whenever you remove a proportionality sign, एक constant add किया जाता है. This G is called as universal gravitational constant. And believe me, universal word जुड़ा हुआ है, इसका मतलब across the universe. Universal gravitational constant. And with more experiments, right, we found the value of universal gravitational constant. Copernicus did that. It's a very famous experiment, right? G की value find करी हमने कितनी? 6.67 into 10 to the power of minus 11 is not just a number. It has some units. अब units क्या होंगी? Think about it. Can you find the units? If you can, tell me right now. Yes, देखो, force is G m1 m2 by d square. Force is Newton, right? और I would say G की वैल्यू क्या होगी? F into d square upon m1 into m2 is equal to G, right? Just put the units of everything. फोर्स क्या है? सर फोर्स है न्यूटन. डी स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर. m1 की यूनिट क्या होगी? kg. m2 की क्या होगी? kg, यानी कि kg स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? सो इसकी यूनिट निकाल ली हमने, बहुत ईजी था. जस्ट थोड़ा रीअरेंज किया फॉर्मूले को. वी जस्ट रीअरेंज द फॉर्मूला, है ना? सिंपल एकदम. इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मीडियम, size and shape of the body. Don't be confused. I have seen very good students making this mistake. Sir, G is equal to force into d square upon m1 m2. यानी कि G depend करता है force पे, distance पे, mass पे. It's a constant. कैसा constant? Universal gravitational constant. इसे किसी से मतलब नहीं है. It does not care. It will not depend on medium. बीच में क्या है? Two masses के बीच में, if you fill something else, will it change? No. This is an Olympiad question, I'm telling you. When you fill two masses and then you put those two masses in water, will the gravitational force change between these two masses? No, it does not depend, right? है ना? Right? Okay. Mass पे depend नहीं करता है, size पे depend नहीं करता है, shape of the bodies पे depend नहीं करता है. Chill. Universal gravitational constant, right? Now, what is the importance of universal law of gravitation? इसकी importance क्या है? Apple गिरने तक नहीं है. It's not just about Earth. It's about universe. How you are stick to this planet because of gravitation. Why moon is circling around the earth? Because of gravitation. But why is it not falling down? Go ahead, search this thing because we have explained this nicely. Why doesn't moon fall back to the earth? This is something which we have explained. Go ahead, search it, you'll find it, okay? Then the whole solar system, it's because of gravitation. Tides are because of gravitation, है ना? Low tide, high tide, it's because of gravitation only, right? It is the importance of universal law of gravitation. Okay. Now, properties of gravitational force, it's also important. It's a very important question from exam perspective. Gravitational force is always attractive in nature. Electrostatic और magnetic force की तरह से gravitational force ऐसा नहीं होगा कि repel भी कर सकता है, right? In magnetic force,
What do we see? North pole repel, south pole repel. In electrostatic, positive charge repel, negative charge repel. But gravitation में masses will always attract. It's a always attractive force, है ना? It is the weakest force in nature. Why weakest? Sir, Earth पे तो जो है काफी strong है. If Earth is able to attract me, हाँ, that's true. But you think about it. If you have mass, and let's say this pen also has mass, when I leave this pen, ये pen मेरे पास नहीं आता है, नीचे जाता है. क्यों? Because it's the weakest force. Mass ज़्यादा होगा, then you will see the effect of gravitation. The weakest force in nature exists as an action-reaction pair. Earth, this pen falls to the earth because earth is attracting the pen. Action, reaction will be, if body A applies force F on body B applies force F on body A. I have explained this in Newton's third law of motion. If you don't know, go ahead, watch the concept bites, क्योंकि तुमने miss कर दिया. देखो जाके, है ना? I will give it to you in description. Earth is attracting this pen, means the pen is also attracting the earth with the same force. लेकिन pen move कर गया, earth move नहीं करी, क्यों? Tell me in the comment section. It is independent of medium, I just told you, and obeys inverse square law. Whatever forces, they have this tendency कि बीच के distance के वो square पे inversely depend करती है. It is called as inverse square law. इसको हमने नाम दे दिया है ना. Force is inversely proportional to square of distance. Electrostatic force के साथ भी यही चीज आएगी. These are called as inverse square law obeying forces. ठीक है? Fine. Yes. So let's just summarize everything. States, क्या state करता है? That every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance from the center between them. Alright. F equals G m1 m2 by d square और G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Unit बहुत जरूरी है इसकी. This is very important. Don't forget and at least you know how to derive it, है ना? भूल भी गए तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हो. Easy एकदम, है ना? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. वेरी गुड. वन क्वेश्चन एंड दिस इज एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन. इसी तरह क्वेश्चन आते हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड देयर मासेस आर हाफ्ड, देन द वैल्यू ऑफ द फाइनल फोर्स इज डैश द इनिशियल फोर्स. अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए और मास को हाफ कर दिया जाए, तो क्या लगता है? फाइनल फोर्स विल बी डैश द इनिशियल फोर्स. थिंक अबाउट इट. If you know the answer, pause the video, solve the question and then write the answer. But if you don't know, listen to me very carefully. देखो इन क्वेश्चन में ना एक चीज सोचो. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? जब दूरी बढ़ेगी, when the distance increases, the force decreases. Distance is doubled, यानी कि फोर्स कम होगा. Masses are halved, मास को भी कम कर दिया है, यानी कि फोर्स भी कम होगा. तो यानी कि फाइनली फोर्स कैन नेवर बी 4 times और 16 times. भाई 4 times होने का मतलब है the force has increased. 16 times का मतलब है force has increased. So it is not possible here because mass is also decreased, distance is also increased. ये दोनों factors force को कम करने में मदद करते हैं. ज़्यादा तो नहीं हो सकता, right? So this and this is not possible. Now let's solve for 1/4 or 1/16. ठीक है? चलो ध्यान से. F will be, for the first case, F will be two objects, masses are halved. ठीक है? F will be, let's say this is m, this is m. अगर सेम मास नहीं भी बोला है, ठीक है, you take m1 and m2, right? m1 and m2, कोई बात नहीं. F equals g m1 m2 upon d square. ठीक है, this is f. f dash is equal to g m1 by 2 m2 by 2 upon d by 2 का whole square, sorry 2d का whole square, right? Let's solve it. Solve करो इसको. G m1 m2 upon 4 d square और m1 m2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? upon 4. So यानी कि this will be G m1 m2 upon 4 into 4 d square. Now think about it. This and this is same ना, है ना? ये और वो same है, यानी कि f dash is equal to f upon 4 into 4, that is 16. नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स का 1/16 टाइम्स है. दैट इज द करेक्ट आंसर. हो गया. आई टोल्ड यू दिस इज नॉट जस्ट वन क्वेश्चन, इट्स अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन और बन सकते हैं सेम पैटर्न पे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड राइट. आई हैव गिवन यू अ होमवर्क, राइट?
Please tell me in the comment section what is the answer. And everybody, if you like what you saw, if you like learning through these small concept bites, subscribe to the channel because we'll keep coming back if you want. And tell us in the comment section कि तुमको कैसे लगते हैं concept bites, अच्छे लगते हैं, क्या improve कर सकते हैं, कोई doubt है, you ask us, we'll reply you back, and don't worry, notes will send you on Telegram. See you, take care, next time, bye bye.